पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने सारायेवो सिटी की वॉकिंग टूर कैसे की एंड देन वी टुक अ हॉल्ट फॉर लंच एट बास्कारसिया। तो अभी मेरे पीछे है सेबिल्ज, जो कि बास्कारसिया मार्केट के बिल्कुल बीच में है। इसको मोहम्मद पाशा ने 1758 में बनाया था। अगर आप इसको देखेंगे, वुडन आर्किटेक्चर है, एक्चुअली फाउंटेन है, और ये इतना मूरिश आर्किटेक्चर में बनाया गया है। इसको यहाँ पे रीलोकेट भी किया था। तो ये सारी एरिया जो अब हम घूम रहे थे, इसको बास्कारसिया जो मेन मार्केट है सारायेवो का, वो है, और उसके बीच में सेबिल्ज है। सेबिल्ज को पिजन स्क्वायर भी बोलते हैं। बास्कारसिया के कुछ ही कदम पर है वियेनिचा, यानी कि सारायेवो सिटी हॉल, which was built in 1892 by the Czech architect Karel Parik. अभी हम एक केबल कार लेके माउंट ट्रेबेविक जाएंगे। माउंट ट्रेबेविक इनका एक छोटा सा हिल टॉप जैसा है जहाँ पे केबल कार चलती है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द केबल कार अप देयर। लैटन ब्रिज देखने के बाद आप कुछ चंद कदम चल के उसकी लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे है एक म्यूजिक पवेलियन। आपको सुनाई दे रही है म्यूजिक? तो ये इसको बनाया था 1910s के आसपास ऑस्ट्रियन परफॉर्मेंसेस, उनके मिलिट्री परफॉर्मेंसेस के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, अगर आप देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। साइट सीइंग के बाद अब टाइम था इवनिंग कॉफी का। हाउ कैन यू कम टू दिस रीजन एंड नॉट टेस्ट द ब्रिलियंट टर्किश कॉफी?
And as we passed through the city center, we could see the war-bombed buildings standing right next to the new ones. It was late evening and we had to return to Baskarsia क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स इसी एरिया में हैं। After a hearty meal of some more doner kebab, cevapi or grilled chicken, we were back to see the beautiful sights of Sabile in all its glory. Thanks for watching. Subscribe, like and share. See you soon.